Dear students, yesterday I taught you change in assertive sentence in the chapter narration. Today I am going to teach you change in interrogative sentence. Rule number 1. If reported speech begins with helping verb and ends in question mark, then to change it into indirect speech, reporting verb said said to is changed into asked inquired of, and connect the both sentences by if whether, remove comma and inverted commas. Here example number 1 has been given. The teacher said to the students, comma, within inverted comma, have you done your homework given by me? क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज. देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं और दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़कर कामा और इनवर्टेड कामा को हटा देते हैं. Here reported speech has started with question word have and ends in question mark. So to change it into indirect speech, said to will be changed into asked. The teacher asked the students. If here you is the pronoun of second person will be changed according to reporting or object. Here reporting or object is students. What would be pronoun in place of students? They. So they had done their homework given by him. Example 2. Within inverted comma, will you play cricket match in the school with me? Question mark inverted comma close. He said to them. देखिए बच्चों, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे. तो हो गया ही आस्क्ड देम और दोनों वाक्यों को हम इफ से जोड़ दिए तो हो गया इफ. यहां देखिए सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करते हैं. तो यू यहां पर सब्जेक्ट है तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देम के अनुसार. तो यहां पर यू नॉमिनेटिव केस में है इसलिए देम का नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा. तो इफ दे और विल को बदल देंगे वुड में. वुड प्ले क्रिकेट मैच इन द स्कूल विथ. यहां देखिए मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट ही है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां हिम हो जाएगा. तो हो गया विथ हिम. एग्जांपल नंबर 3. दीपक सेड कॉमा विदिन इनवर्टेड कॉमा have you solved all the questions given by the teacher, comma Suresh question mark will you go to attend the school tomorrow question mark into comma close. Here reported speech has started with helping verb have. This is why we should change reporting verb said said to into asked. Here Suresh is reporting verb object. So Deepak asked Suresh if you is the pronoun of second person, change according to reporting verb object. Reporting verb object is Suresh. What would be pronoun in place of Suresh? He. So if he had solved all the questions given by the teacher. Here Deepak has asked the questions again. So we should only change said or said to and asked, and we should use again and asked again. If he would go to attend the school the next day. Dear students, I am going to teach you rule number 2 in interrogative sentence. If reported speech begins with question word and ends in question mark, then to change it into indirect speech, reporting verb said said to is changed into asked inquired of, and connect the both sentences by given question word, remove comma and inverted commas.
यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेट रहे या सेट टू उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं और दोनों वाक्यों को दिए गए क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड टू हिम, व्हेन विल यू हेल्प अस इन द विलेज टुमारो। हियर रिपोर्टेड स्पीच हैज स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड व्हेन and ends in question mark. So we should change reporting verb should to into asked. So they asked him when. Here you is the pronoun of second person will be changed according to reporting or subject. Here reporting or object is him, but you is in nominative case. So what would be nominative case of him? He. When he would help. Here us is the pronoun of first person will be changed according to reporting or subject. Reporting or subject is they, but us is in objective case. What would be objective case of they? Them. Help them in the village next day. छात्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन वर्ड व्हेन से शुरू है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए शेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिएगा, लेकिन दोनों वाक्यों को जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहे उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देना चाहिए। अगर व्हेन से शुरू है तो व्हेन से जोड़िए, व्हाट से शुरू है तो व्हाट से जोड़िए, व्हाई से शुरू है तो व्हाई से जोड़िए, वेयर से शुरू है तो वेयर से जोड़िए। जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहे उसी क्वेश्चन वर्ड से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हो गया दे आस्क्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, इसलिए व्हेन से हमने जोड़ दिया, व्हेन हो गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार, इसलिए ही हो जाएगा। व्हेन ही वुड हेल्प, यहाँ आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए बदलेगा ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दे के अनुसार, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, देम इन द विलेज नेक्स्ट डे। एग्जांपल नंबर 2, इन व्हिच क्लास डू यू रीड? राकेश सेड टू दीपक। Your reported speech has started with question word and ends in question mark. This is why your set to will be changed into asked. Rakesh asked Deepak, and connect the both sentences by given question word. In which class? This is your question word. So connect the both sentences by in which class. So Rakesh asked Deepak in which class. Here you is the pronoun of second person. Will be changed according to reporting or subject. Here reporting or object is Deepak. What will be pronoun in place of Deepak? He. He read. Example number 3. The conductor said to the passengers, comma, within unit comma, why did you not take your ticket to go to Lucknow? Question mark. What are you doing? Question mark. Unit comma close. Here reported speech has started by question word why and ends in question mark. So to change it into indirect speech, the conductor asked the passengers. Now connect the both sentences by given question word why. Why he had not taken their ticket to go to Lucknow and asked again what they were doing. The conductor asked the passengers why they had not taken their ticket to go to Lucknow and asked again what they were doing. Here why did you? Here you is the pronoun of second person. Will be changed according to reporting or subject. Here reporting or subject is passengers. So what would be pronoun in place of passengers? They. This is why I have written here they had not taken their ticket. Thank you.